So we are going to discuss current affairs, and one of the current affairs, the current affairs, which is giving currents to the whole world, that is U.S.-China relationship. Now, we as Pakistan and our neighbors, China, Iran, and India, Afghanistan, we are all involved in this scenario. Now, China, India, China, US relationship, that is of global significance. Global significance. I hope I'm audible and visible. If I am very visible and audible, so please like this video broadcast, mark your attendance. And somebody is already sharing ongoing class. Thank you very much. Take the credit. Take the credit. That is important. Also share it in Safe 2 WhatsApp group. Now, current affairs has 3 sections. Current affairs has 3 sections. Clearly marked, earmarked, EAR. Can anybody tell me the 3 earmarked sections of current affairs in the comment? I don't see your comment so far. 3 earmarked sections of current affairs. Very clear. And questions also come from the 3 sections. Questions in CSS PMS come from the 3 sections. So anybody can tell me what are the 3 earmarked 3 sections? Hassan Tariq, I saw your comment. The first comment that I see. Now, the 3 earmarked, clearly demarcated. These are vocabulary. Learn these vocabulary words. Clearly demarcated. Clearly demarcated. Earmarked. Thank you, Imran. You are my great teaching assistant. So I appreciate your commendable efforts. Now, anybody can tell me the 3 earmarked. Can you write EARMARKED? Earmarked. Build your vocabulary. Earmarked is together. One word. Clearly demarcated. Clearly demarcated. As Muhammad Usman wrote, domestic, national, and international. So how technically we define these 3 clearly demarcated sections? We call it domestic affairs, bilateral and multilateral affairs, and global affairs. This is the language of current affairs. Now, domestic, national, international, it is not so impressive. The technical languages, use always technical language. Demarcated, marketed, not marketed. Demarcated, Khalid Iqbal. Mark, marker. Demarcated, with C, not with K. Language is very important. Language must be very clear, very accurate. So how can you get more marks in exam? When your language becomes technical. And then you feel that I am no more a primary or secondary school student. I am no more a primary and secondary school college student. सबसे आसान तरीका है, अगर आप ये फीलिंग एंजॉय करना चाहते हैं कि जी मैं बड़ा
अच्छा लिखने लगा हूँ. माई बेस्ट फ्रेंड मॉर्निंग वॉक. पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947. तो उस तरह के लैंग्वेज से निकलने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल academic language. Simple. Use terminology. Terminology is not difficult vocabulary. Remember. Terminology is not difficult vocabulary. Terminology is not flowery, bombastic language. अब देखते हैं कुछ लोग आपको डिस्करेज करते हैं कि जी बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज मत इस्तेमाल करें, तो वो बात ठीक है, लेकिन टर्मिनोलॉजी आपने जरूर यूज करनी है. अगर करंट अफेयर्स है तो इसके अपने टर्म्स है, आईआर के अपने टर्म्स है. आप विकिपीडिया में जाए, उन्होंने हर सब्जेक्ट के वोकैबुलरी लिस्ट बनाई है, ग्लॉसरी बनाई है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके मार्क्स आ जाए. एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है टेक्निकल लैंग्वेज से. जब वो कोई टर्म देखता है, टर्मिनोलॉजी देखता है, मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, डोमेस्टिक अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स, सिर्फ ये अल्फाज देख के बस वो ढेर हो जाता है कि यार ये बंदा बस ठीक है. अब आप वही लैंग्वेज लिखते हैं कि जी पाकिस्तान है सो मेनी प्रॉब्लम्स, कश्मीर प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कश्मीर प्रॉब्लम इज़ आवर जुगुलर वेन, मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरी पीपल दे आर मुस्लिम्स. तो ये बात जो है ये हम प्राइमरी क्लास में, सेकेंडरी क्लास में पढ़ते थे. इसी से एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा जब तक आप इसमें टर्मिनोलॉजी न डालें, टेक्निकल लैंग्वेज न डालें. सो कमिंग बैक टू द करंट अफेयर्स discussion, we have three main sections clearly demarcated, earmarked. Number one is domestic affairs, number two is bilateral and multilateral affairs of Pakistan, and number three is global affairs. So you have to work on these three parallel lines. These three parallel lines. You see daily in my daily assignment, I give you topics from Pakistan, China. So this is bilateral. Pakistan, European Union. This is multilateral. Socio-economic problems of Pakistan. This is domestic. Global warming. That is global affairs. So when you start writing on these topics, technically, can you write now the examples that I gave in the comment box? My lectures you have to listen to twice. One, so I see your comments, I correct your comments. If you make a mistake, spelling mistakes, terminology mistake, so I correct because I see your comments. This is a screen-based education. If you do not come on screen, I don't see you. And later on, once you listen to the lecture once I finish, it is recorded, listen to it again, then make your notes along with the reading material. You will have to give it 2 hours, but it will be worth of giving it 2 hours. You can rewind, you can forward quickly, this, that. So get the crux, the main points, and then go ahead. So we have the examples of bilateral, and then we have the example of multilateral, and we have the example of domestic, and we have the example of global. आप लोगों ने चाह जाना है इन तमाम ये जो 3 फ्रंट्स है इस पे चाह जाना है अपने, हर कोई चीज आपसे बच के ना निकले. So today we have China and USA. Now these two are very important because USA is the world number 1 economy. It is the only superpower. This is the description of USA. The only superpower, the top most important economy of the world number 1 economy, permanent Security Council member, huge influence,
political influence on the world, representing unipolarity. That is the only one pole of the world, the only one power that we have. All others are great powers. But superpower is only one, and that is USA, according to current affairs and international affairs, international relations. We do not have any other superpower. There was a superpower, USSR, but that is gone in 1989, 1990. That is now gone. Russia is there. Russia is now a major power, a great power, but Russia is not a superpower. China is not a superpower. Superpower is not the street language, it is IR terminology or current affairs terminology. On the other hand, we have China. So China is number 2 economy of the world. China is permanent Security Council member. China has veto power. China has a lot of economic power on the world. But China is not a superpower. And USA is a democratic, capitalist, liberal economy, while China is communist politically, mixed or capitalist economically, and China doesn't have political designs to influence the world affairs. So both are very clear to us that what is China and what is USA. Anybody can go to Wikipedia and give me the statistics of USA economy and China economy. Write in Google, USA economy, Wikipedia, and copy paste here the paragraph of economy only, the first paragraph, and then China economy, Wikipedia. So China economy and US economy, both we have to compare. There is a probability that China will become number 1 economy maybe in 2025, but so far USA is predominant both economically and politically. Nobody wants to go to China to live. Nobody wants to send his or her children to China for education. China is not an attractive country because China is going very down in HDI. Anybody can tell me the HDI statistics of China? Human Development Index. Everybody wants to go to USA. USA has a big name, and everybody wants to go there, to study there, to live there, to get the passport of USA. Nobody wants to go to China so far. Very few people. ये सिर्फ जो कपड़े मपड़े वाले हैं, कपड़े बेचने वाले, वो जाना चाहते हैं चाइना. बाकी जो है चाइना में कोई जानना, वहाँ रहना, वहाँ का पासपोर्ट लेना, वहाँ ज़िंदगी गुजारना, वहाँ तालीम करना, this is not the priority of the people. Because China itself is very low on the HDI indices, Human Development Index. Now, Sunny Prince tells us that the USA is a country of 50 states covering. I was only asking about not the geography. The geostrategic position of USA is not important because USA has only Canada at the north and Mexico at the south. So, like Pakistan has a very complicated geostrategic position. Pakistan has China, India, Iran, Afghanistan. So it's a very interesting kind of geostrategic position. जो हमारा जियोग्राफी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. अमेरिका का जियोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि कनाडा भी एक पीसफुल कंट्री है, मैक्सिको भी कोई इतना वो नहीं है, दो मैक्सिको इज पार्ट ऑफ G20. साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज जो है वो G20 में है, मैक्सिको, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील.
ये 3 कंट्रीज जो है वो टॉप G20 इकोनॉमीज में है, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड मैक्सिको। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मैप कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है। अब साउथ अमेरिका में जो है सिर्फ दो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। चिली कुछ गुजारे वाला है, चिली। आई हैव बीन टू ऑल दीज कंट्रीज एंड Peru, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Salvador, they are not so important. Bolivia, if we go to the other side, Uruguay, Paraguay, I have been to each and every South American and North American country. I have covered the whole, both North and South continents. This is one of my specialty, that I understand very well the North America affairs and South America affairs and Central America affairs. These are 3 very important regions of the world: North America, Central America and South America. Anybody can tell me who is the most important country, which is the most important country in Central America? सेंट्रल अमेरिका का कोई कंट्री का नाम बताए, कोई भी कंट्री बताए या जो इंपॉर्टेंट कंट्री हो। तो शिकागो, फिल्म मेकिंग, हॉलीवुड वगैरह ये हमारा टॉपिक नहीं है। इकोनॉमी जो सीएस स्टोरी ने दिया है, सेंट्रल अमेरिका में कोई कंट्री है आपको याद है? क्यूबा। यूएसए इज नॉर्थ अमेरिका। In the North America, we have USA and Canada. In the Central America, we have Costa Rica, Cuba. But there is one important country, that is Panama. In Nawaz Sharif, Panama. Panama scandal. Because of Panama Canal, I have the honor and I am so happy that Mexico is in North America. It is Central plus North. Panama is important because of the Panama Canal. And just in 30 minutes, it was such a wonderful day of my life that I traveled just in 30 minutes from Pacific Ocean to Atlantic Ocean. How? Through Panama. तो पानामा एक केनाल है, उसमें 30 मिनट्स में मैं बाय बस गया था। लोग बाय बोट भी जाते हैं, या उसमें आप जो है आधा घंटे में एटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन चले जाते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो दीज कंट्रीज दे हैव देयर सिग्निफिकेंस बट नॉट दैट मच। इन द साउथ वी हैव अर्जेंटीना एंड ब्राजील। they are big economies because they are part of G20. You have to understand G7 and G20. G7 is already part of G20. You should have a general understanding of these countries. Then you will understand world politics. ये जो सेफ 1 में मैं आपको आर्टिकल्स देता हूं, अगर आप लोगों का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो आर्टिकल्स आपको समझ नहीं आएगी। कोस्टा रिका is a beautiful country. I have been to Costa Rica and there was a time that it was competing with Denmark to be the world happiest country. I don't remember exactly that whether now it is Denmark or it is Costa Rica. Where is Denmark? In which part of the world? Anybody? Like Costa Rica is Central America. So what is the name for Denmark? If you know these basics, then you will understand world politics. Why USA is interested in Panama, Costa Rica. You know, in Panama there is no currency. They do not have their own currency. Panama में अपनी currency नहीं है. They use US dollars. वो कह रहे हैं क्या जान छुड़ाना, ये रुपया शुपया जो हम बना रहे हैं। उन्होंने जान छुड़ाई है स्कैंडिनेविया एग्जैक्टली। तो डेनमार्क इज इन स्कैंडिनेविया। अब ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई डेनमार्क यूरोप में है या नहीं है, इतना तो आपको समझ आनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि डेनमार्क एशिया में है या मिडिल ईस्ट में है, ये तो क्वेश्चन नहीं होगा। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दे आर ऑन द टॉप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI. So Denmark and Costa Rica, they sometime compete to be the world happiest countries.
Now, coming back to our main topic, read the world history, read the world map, just have some understanding which country is doing what. G7, G20, that is must. Because in G7, we have already the G7, plus we have the BRICS, and then few countries like Turkey, Saudi Arabia, and Brazil is already in BRICS, but Argentina is not in BRICS. Anybody can tell me the countries other than BRICS and G7? Other than G7 and BRICS, we have G7, 7 countries. 7 plus BRICS, BRICS 5. So 7 plus 5, how many these are? 12. And then we have remaining 8 countries. So 8 countries, they are in the G7. Or simply give me the list of G20 countries. So these G20 countries include G7 plus BRICS plus the remaining countries. These are the top most important countries in the world. Top most important countries economically. वैसे तो नॉर्थ कोरिया भी इंपॉर्टेंट है, उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है. नॉर्थ कोरिया वो भी है, 1 मिनट में आपको जो है इधर उधर कर सकता है. So please share the list of the G7, G20 countries. In the G20 on the top you have G7, then you have BRICS, and then you have emerging economies. Unfortunately, Pakistan is not yet part of the G20, and it should be. Because population wise Pakistan is 5th, so why not it should become part of the G20. मतलब 22 करोड़ अवाम, यार कुछ तो करो, मतलब दुनिया में अपने कोई नाम बनाओ. G20 में भी नहीं आते 200 में से. So the economy of the United States is that of a highly, thank you CSS story, a highly developed country with a mixed economy. It is the world's largest economy by nominal GDP and net wealth, and the second largest by purchasing. Here is a very interesting data. What we see here in this CSS story comment, very interesting data. Let us analyze it. And when you analyze this data analysis, you become technical. You become technical. So we have the world's largest economy by nominal GDP and net wealth, and second largest by purchasing power parity, PPP. अब चाइना जो है, चाइना भी नंबर 1 इकोनॉमी है, बट पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि भाई लोग जो है $1 में कितना खरीद सकते हैं. अब पाकिस्तान जो है वो पीपीपी में मेरे ख्याल में 25th है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में कोई 44 है, आगे है. नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक्चुअल जीडीपी है कि कितना माल आप बना रहे हो. अब परचेजिंग पावर जीडीपी ये है कि भाई आप $1 पे कितनी चीजें खरीद सकते हो. अब पाकिस्तान में जाहिर बात है कि $1 जो है वो 170 रुपया है. 170 रुपया में बंदा दाल माश भी खा सकता है, ऊपर से लस्सी भी पी सकता है, चाय भी पी सकता है, और क्या क्या कर सकते हैं. एक रोटी गरम तंदूर वाली रोटी भी ले सकता है. तंदूर की रोटी 20 रुपए की, फिर ऊपर से दाल माश 50 की, तो 70 ये हो गए. फिर जो है 20 रुपए का कप चाय, एक आइसक्रीम भी मिल सकता है. मतलब $1 में कितनी चीजें पाकिस्तान में मिल सकती है. 170 160 है, जो भी है. हेयर स्प्लिटिंग ना करे तो बाल के खाल मत उतारा करे, एग्जाम्पल को समझा करे. तो अब ये जो है कहानी है कि पीपीपी जो है परचेजिंग पावर में कुछ कंट्रीज बहुत आगे होते हैं, क्योंकि वहां पैसा जो है वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है. अब यूएसए में $1 जो है वो उस पर अपना सवाल भी नहीं खरीद सकते. तो लेकिन वो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है, क्योंकि वहां जो वेल्थ है पर कैपिटा, एक बंदा जितना कमाता है वो बहुत ज्यादा है उसकी वैल्यू. एक बंदा वहां जो है 1 घंटे में
दे अर्न लाइक $20, 1 घंटे में $20। अब $20 से कितने रुपए बनते हैं? 20 को ज़रब दे दो 160 में, कोई ज़रब दे दे, ज़रा क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो अब वहाँ लोग क्यों जाते हैं? पाकिस्तान तो अमेरिका से सस्ता है, लेकिन वो पश्तो में कहते हैं कि उह पर पैसे से हो जी, उह पैसा नहीं। अगर ऊंट जो है वो 1 पैसे का हो जाए, लेकिन जब 1 पैसा भी ना हो तो फिर क्या करेगा बंदा? एक बंदे ने कहा नहीं मेरा ऊंट ले लो यार, ले लो ले लो ले लो। उसने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, नहीं है पैसे। उसने कहा यार 1 पैसे का ले लो। उसने कहा मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। उसने कहा फिर भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास 1 पैसा भी नहीं है ऊंट के लिए, अब तुम्हारा हमने क्या करना है? तो 3200 रुपये जो है वो 1 घंटा का खरीदते कमाते हैं। 3200 रुपया कम से कम, ये आम रेट है। ऐसे तो लोग हैं वो तो $100 $200 भी घंटे के लेते हैं। मिनिमम जो है तकरीबन 20 15 18 ये उनका चलता है। तो चाइना जो है वो पीपीपी में ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड इट्स फर्म्स आर near the forefront in technological advances, especially in computers, pharmaceuticals, and medical, aerospace, and military equipment. अच्छा ये क्यों है रीजन? अच्छा 32-20 जो भी है। तो सिर्फ मिसाल आपको समझाना है, आपको पैसा मैसा नहीं देना, सिर्फ खुश करना है कि यार ये क्या कहानी है। अच्छा हम आते हैं अब इस पे यूएसए की पावरफुल जो है इतना ज्यादा क्यों है, इसकी रीजन क्या है? फिलोसॉफिकली उसका रीजन जो है वो प्रेगमेटिज्म है। प्रेगमेटिज्म ये पियर्स और विलियम जेम्स जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे आगे कि उन्होंने एक फिलॉसफी दी है, उसका नाम है प्रेगमेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी। हाईली प्रैक्टिकल पीपल है वो, बहुत प्रैक्टिकल है, आइडियलिस्ट बिल्कुल नहीं है, काम करते बस एक्शन, प्रेगमेटिज्म। सेकंड इसका रिजल्ट क्या निकला? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हाईली इनोवेटिव एंड क्रिएटिव पीपल, यूएस सिटीजन्स। अब दुनिया की जितनी पेटेंट्स है, पेटेंट्स PATENT पेटेंट, और उसके बाद क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, उस सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। ठीक है ना? अब ये कप है तो ये कप तो हर कोई बना सकता है, ठीक है? ये जो है ये कप हर कोई बना सकता है, लेकिन पहला कप जिसने बनाया था वो बंदे को ख्याल आया कि यार ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि मैं ये चाय मैं जरा आराम से पी लो, क्योंकि इंसान पहले जानवर की तरह इधर से पीता था हाथ से। फिर उनको ख्याल आया कि यार ये मिट्टी थोड़ा सा इकट्ठा करो, उससे मिट्टी से कोई चीज बनाओ ताकि मैं उससे पानी पीऊं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो पहला कप बन गया, तो पहले तो लोग उसको क्लेम नहीं करते थे, बस जो ने कप बना दिया। अब जो है वो क्लेम करते कि जी ये पहली दफा मैंने बनाया है, इसको कहते हैं पेटेंट। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि भाई मैंने अपना दिमाग इस पर इस्तेमाल किया है, ये मेरा राइट है इंटेलेक्चुअल, ये कप मैंने पहले दफा बनाया है, आप इसका तुम जितना भी सेल करोगे उसका पैसा मुझे मिलना चाहिए। ये जो कॉपी राइट्स होते हैं, ऑल द कॉपी राइट्स आर रिजर्व्ड। भाई किताब मैंने बनाई, उधर से लोग जो है ना उसको पायरेट करके नकल कॉपी पेस्ट करके जो है इधर उधर बांट देते हैं। तो गरीब बंदे को पता भी नहीं कि भाई मैंने इतनी बड़ी किताब लिखी है, वो कहाँ गया, किसने पढ़ा। अमेरिका में एक सीडी जो है वो कभी $100 $200 $500 की होती है, खुद मैंने देखी है, खरीदी नहीं है, कौन खरीदेगा उसको? $500 की एक सीडी। वही सीडी आपको पाकिस्तान में $100 की मिलती है। तो वहां जो सीडी बनाएगा वो ऐसे तो बिलियनियर नहीं बने वो लोग। तो एक दफा जब वो सीडी बनाएगा, कोई म्यूजिक एल्बम होगा, कोई और चीज होगी, उसका वो पेटेंट बनाता है, पेटेंट, कि भाई ये चीज मेरी है, ये मेरी ओनरशिप है। कैपिटलिज्म, प्राइवेट ओनरशिप। अब प्राइवेट ओनरशिप जो है वो सिर्फ जमीन की नहीं है या गाड़ी की नहीं है, हर चीज की प्राइवेट ओनरशिप है। अब ये मेरी क्लास है, मैं अपने गला को जो है
यहाँ जब दबा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कल जो है कोई बंदा इसको यहाँ से उठा के जो है मेरा शक्ल गायब करे और खुद बोले, तो मुझे तो दुख तो होगा कि यार कमाल है, मेहनत मैंने की है और फायदा कोई और उठा के ले गया। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रेगमेटिज्म। इन तमाम चीज़ों की वजह से यूएसए अभी भी दुनिया का टॉप मोस्ट इकोनॉमी है। पेट्रो डॉलर्स भी है, डॉलर जो है उनका चलता है पूरी दुनिया में। अब डॉलर जो है वो एक किस्म का ऑब्जेक्ट है, कमोडिटी है। अब चाइना जो है, हम चाइना पे आते हैं, अब दोनों का फिर कंपैरिजन करते हैं, फिर उनके क्लेश देखते हैं कि भाई क्लेश किधर है। चाइना ऑफिशियली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ कंट्री इन ईस्ट एशिया, बट ठीक है, ये सारी बातें। मोस्ट पॉपुलस है 1.4 बिलियन, मतलब पूरी दुनिया कितनी है? 7 बिलियन, 7.8। पूरी दुनिया जो है 7.8 बिलियन है, सिर्फ अकेला चाइना जो है वो 1.4 बिलियन है। अच्छा, इसकी इकोनॉमी जरा मुझे बताएं, चाइना की इकोनॉमी। सी एस स्टोरी, थैंक यू। अब चाइना की इकोनॉमी जो है, द इकोनॉमी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ मिक्स्ड सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी विच इज कंपोज्ड ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एसओईज, एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट बिजनेसेस। अब अमेरिका में जो है एक बंदा जो है वो 1 घंटे के $20 लेता है, चाइना में वो $1 लेता है। तो अमेरिका वालों को ये ख्याल आया कि यार ये अपनी चीजें जो है हम उधर चाइना में क्यों ना बनाए और दुनिया को बेचे, क्यों हम $20 एक एक बंदे को दे दे। ट्रंप का यही रोना धोना था कि यार तुमने क्यों चाइना को इतना बिजनेस दे दिया। बाकी लोग कहते कि यार अमेरिका का काम ये टूथपेस्ट बनाना और ये जो है ना कैंचिया बनाना और ये काम नहीं है अमेरिका का। अमेरिका बड़े बड़े काम करे, लेकिन उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो आई गई अमेरिका में। अब लोग बेरोजगार तो हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, फैक्ट्रीज जो सारे चाइना चली गई। तो उनके पास ह्यूमन कैपिटल है, चाइना के पास बहुत लोग हैं उनके पास, और सस्ती भी है, वेरी चीप। अब अमेरिकन वाइट अमेरिकन पागल है कि वो जाके जो है ना कम पैसे पे काम करे। तो इस वजह से एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2.947 ट्रिलियन तक चला गया। अमेरिका का सारा पैसा वहां गया। अब चाइना के पास ये हवाई जो इनका मोबाइल फोन है, मेरे ख्याल में अभी तक इनका कोई इन्वेंशन नहीं है। अगर किसी को पता हो तो बता दे हमें। व्हाइट अमेरिकन सुप्रीमेसी है, जिस तरह के अरब लोग हैं। अरब लोग जो है पाकिस्तानी को ले जाते हैं, वहां गुलाम बनाते हैं, उनका वो एक वाली होता है और उसका जो है कफील होता है, वो उसके साथ पासपोर्ट को बॉक्स में बंद करता है और उसको कि तुम गधे की तरह काम करो। अब अरब बंदा काम खुद कभी नहीं करेगा, ये उसके सुप्रीमेसी है। पाकिस्तानी जो है वहां बैलों और गद्दों और जानवर की तरह काम करते हैं। तो इसी तरह अमेरिका में भी जो है व्हाइट लोग काम नहीं करते, छोटे मोटे काम नहीं करते, बड़े बड़े काम करते हैं। तो एफडीआई जो है आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया ने चाइना में जो है काम करना शुरू किया। अब चाइना ने उसका फायदा उठाया। आज एक आर्टिकल मैंने सेफ वन में शेयर किया है, मिरेकुलस ग्रोथ ऑफ चाइना। अच्छा, जो मिरेकुलस ग्रोथ है, अजीब उनका ग्रोथ हो गया। एकदम से बहुत गरीब मुल्क था, अब एकदम से वो नंबर 2 इकोनॉमी बन गई। नंबर 3 जो है वो जापान है। तो ये क्या मेरेकल जो है, मेरेकल का मतलब मोजिजा, ये मोजिजा कैसे हो गया? इसमें 2 चीजें हैं। एक है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि चाइना में कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था, बहुत सख्त किस्म का सोशलिज्म था। लोग जो है वो सारी स्टेट के नौकर होते थे, प्राइवेट काम किसी का नहीं था। जिस तरह अभी नॉर्थ कोरिया में है या क्यूबा में है कम्युनिज्म में प्राइवेट बंदा काम नहीं कर सकता। अब मैं क्यूबा में 4-5 साल रहा हूं। क्यूबा में बिस्किट बेचना क्राइम है। अगर एक बंदा जो है ना बिस्किट बेचता है, कोई वहां दुकान खोलता है और उसमें वो बिस्किट बेचता है, अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसमें 10 साल उसको सजा हो सकती है, क्योंकि बिस्किट है, कपड़े है,
टमाटर है, ये आलू है, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेट का काम है, ये रियासत का काम है कि वो बेचे। आम बंदा जो है वो रियासत के लिए काम करेगा, वो अपना काम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं कम्युनिज्म। चाइना में कम्युनिज्म थी, एकदम से उन्होंने ओपन कर दिया, आओ जी काम करो। लोग तो तरसे हुए बैठे थे कि अपना कारोबार चलाए। तो उन्होंने जो है ना कारोबार ऐसा शुरू किया कि हर घर फैक्ट्री बन गई। और अब ये हाल देखते हैं अब दुनिया चाइना का। तो अब अमेरिका जो है वो जाग गया कि यार ये हमने क्या गड़बड़ की, हम कहां फंस गए, किस पे हमने जो है ना ट्रस्ट किया। अगर कोई छोटे मोटे बांग्लादेश को देते, किसी इंडोनेशिया को देते, पाकिस्तान को देते, इवन इंडिया को देते, तो वो इतना सर हमें इतना वो नहीं दिखाता हमें अपना चेहरा, ये मैंने किसको बना दिया। मैं देखता हूं कभी कभी फेसबुक पे मेरे पुराने स्टूडेंट जो हैं किसी और आईडी से आ जाते हैं जी, मेरे साथ वो शुरू करते हैं। मुझे पता है पूरी पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो सही अंग्रेजी लिखते हैं। मेरा दिमाग खा खा के उनके एक एक आए कामा पंक्चुएशन ठीक ठीक कर 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 करके फिर वो आते हैं जी मेरे साथ जो है ना डिस्कस करते हैं, मेरी चीज़ों को चैलेंज करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। लेकिन आप उनको तैयार करते हैं, इसको कहते हैं फ्रैंकनस्टाइन मास्टर। इसके लिए टर्मिनोलॉजी है फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन मास्टर यह है कि एक साइंटिस्ट जो है एक बला बनाता है, वही बला फिर उस साइंटिस्ट को खा जाती है। अब साइंटिस्ट हिला रहा है कि यार मैंने बला बना दिया, बला ने मुझे खा लिया। तो चाइना के साथ यही हो रहा है, फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर। तो ये इनका जो है चाइना का HDI वैल्यू जो है 0.761 है, ज़करिया मकसूद। तो ये कितने नंबर पे कितना है, पोजीशनिंग 85 पे है। हाँ फिर भी बेहतर है 85। पाकिस्तान तो 170 में होगा, HDI में 170 160 होगा। पाकिस्तान का भी देखें कि HDI की पोजीशन क्या है। अब टॉप नंबर 1 पे या डेनमार्क होगा या नॉर्वे होगा, ये कंट्रीज होंगे। तो ये हमारी बेसिक बातें हो गई। अब हम आते हैं थोड़े से इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ये है कि USA और चाइना जो है उनके दरमियान राइवलरी है। मैंने आपको बेहतरीन यहाँ वो दिए हैं लेक्चर्स, मतलब नोट्स दिए हैं, लिंक्स दिए हैं कि भाई दोनों के दरमियान जो राइवलरी है इसको हम कैसे समझें। एक तो यह है कि दो बड़े जेंट्स है, दो बड़ी इकोनॉमीज है, नंबर 1 नंबर 2। तो नंबर 1 नंबर 2 में राइवलरी तो होगी। नेक्स्ट जो है ये है कि इनके अलायंसेस क्या है, अलायंसेस, इनके एलाइज कौन कौन है, हमने ये समझना होगा। 152 ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 152 पे है HDI में। ठीक है, ये डेटा बड़ा ज़रूरी होता है। आप जब ऐसे लिखते हैं या करंट अफेयर्स लिखते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स लिखते हैं, तो आपके पास ये डेटा होता है कि पाकिस्तान एजुकेशन में किधर है, पाकिस्तान पॉवर्टी में किधर है, GDP किधर है। तो ये इसी से आपका लैंग्वेज टेक्निकल होगा और एग्जामिनर इंप्रेस होगा। ये आसान तरीका है डेटा डालना। पाकिस्तान रैंकिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फेल 2 नॉचेस एंड स्टूड एट 154th पोजीशन। हाँ पहले ये बेहतर होता, अभी 2 जो है नॉचेस इसका गिर गया, 2 पोजीशंस गिर गया, मजीद खराब होता जा रहा है। तो आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो आपने इसको संभालना है। बहरहाल तो अलायंसेस जो है क्या क्या है, आप कोई मुझे बता सकता है कि USA की अलायंस कौन है और चाइना की अलायंस कौन है। ये आप टेक्निकल चीज आपने समझना है। कौन कौन से अलायंस है, USA के फ्रेंड्स कौन से हैं और चाइना के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है कि USA जो है उसके साथ पूरा यूरोप है और टॉप 5 कंट्रीज कौन है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट फॉरवर्ड नॉर्वे, नंबर 1 नॉर्वे है, फिर आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है, आइसलैंड है। ये सारी जो है ये
कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। अच्छा, यूएसए के जो अलायंस है वो कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये जो है यूएसए की अलायंसेज है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया और जापान, क्योंकि ये दोनों एशिया में है। चाइना भी एशिया में है। अब चाइना के अलायंसेस किन के साथ है? पॉलिटिकल अलायंसेस। चाइना बिजनेस तो हर जगह करता है, लेकिन पॉलिटिकल अलायंसेस जो है चाइना के किधर है? तो एक चाइना जो है वो क्लोज समझा जाता है नॉर्थ कोरिया का, रशिया का और क्यूबा का। ये जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप कंट्रीज है, वेनेजुएला, ठीक है, ये छोटे मोटे कंट्रीज। पाकिस्तान के साथ भी चाइना जो है बहुत क्लोज है, लेकिन पाकिस्तान जो है एक बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो एक सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस जो है अभी तक, दैट वी कुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन चाइना एंड यूएसए। We are very good partners with the USA, and at the same time we are very good partners with China. So this is one of the success story of the foreign policy of Pakistan. It is very difficult to maintain the balance. We receive a lot of pressure. Now India is very clear. India and China both are enemies. India and USA both are friends. Very clear. Pakistan is playing a very good role. And in this Minister of Foreign Affairs of Pakistan goes the credit to the Foreign Office that they can maintain the relationship with China as well as USA. Now, Sunny Prince, all these are economic alliances, what you are talking. UK, France, Europe, Japan, India, South Korea are US allies. North Korea, Russia, Cuba, yes, you are right. North Korea, Russia, Cuba, Burma have comprehensive relations with China. Kyun? Because these are all socialist type of countries. Russia is not socialist now, but it was socialist, communist. Cuba is still socialist, communist. Burma is still type of socialist country. So though Burma is under army, it was under army rule, and now it is not like that. So now what are the problems between USA and China? One of the biggest problem that we have, that is South China. South China is a controversial area where China wants to maintain. No, Denmark and Norway are not socialist. They have social democracy, social services. Okay, let me finish this question and again I'll go to that. This is a very important point. Society, to be social, it doesn't mean to be a socialist. We are all social animals. We have society, we live in society, social services, socio-economic problems. So it doesn't mean that we are socialist. Socialist, capitalist, communist, that is an ideology where state will be the entrepreneur and private individuals will be not entrepreneurs. ठीक है, हम सारे सोशल है, मैं भी सोशल हूं, आप भी सोशल है, हम सारी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल सर्विसेज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशलिस्ट बन गए. So comprehensive relation means that in all areas, political, economic. Now China and USA, even China and India, they have very strong commercial relations, more than Pakistan. China, India, anybody can go to Google and quickly bring me the data. China, India, bilateral trade.
That is more than bilateral trade between China and Pakistan. And this is the biggest problem that we have. This is the biggest criticism on पाक चाइना रिलेशनशिप. तिजारत जो है वो चाइना और इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा है हमसे, और हम नारे लगा रहे हैं कि जी डीपर देन सी एंड हायर देन हिमालयाज एंड वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स. सारे नारेबाजी है. ये सीपेक ना होता तो हमारा और चाइना के दरमियान कुछ है ही नहीं. सारी हवाई बातें. जिस तरह के हमारे लोग जज्बाती बातों से खुश होते हैं, तो चाइना वालों ने भी हमारी रग पकड़ा हुआ है. जी जज्बाती बातें करो, बस जी आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको बचाएंगे, ये है वो है, बेफिक्र रहो. और हम भी बड़ी तसल्लियाँ लेते हैं कि जी हाँ हाँ हाँ. ये तो नवाज शरीफ और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, ख़ासतौर ये जो सियालकोट वाला बंदे दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, प्रोफेसर जो है वो प्लानिंग कमीशन वाला, बहुत से लोग ये चीज़ समझते हैं, नहीं समझते. सियालकोट का किधर है, नारवाल का जो है ये प्लानिंग कमीशन का जो मिनिस्टर था, तो ये बतने अकल उनको कैसे आ गई कि यार इनके साथ हमें कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट करना चाहिए. इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील एंड रिलेटेड आर्टिकल्स टू चाइना. चाइना स्टूड 5, ये देखो आप, इसको डेटा खुद बोलता है 595 मिलियन, और इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना 2.7 बिलियन. अब यही चीज जब पाकिस्तान के साथ डालो कि पाकिस्तान और चाइना का कितना है, बहुत कम है इसके मुकाबले में, जितना मैंने पढ़ा था. तो ये अहसन इकबाल और ये लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि यार चाइना के साथ कोई काम भी करे, सिर्फ जज्बाती बातें है सारे, कि हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा और जी ये वो चीनी पाकिस्तान भाई भाई. ये क्या है? तो एक होता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप. तो इंडिया और चाइना का भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है. कॉम्प्रिहेंसिव तब होता है व्हेन इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल, कल्चरल, एजुकेशनल, एनवायरमेंटल एंड ऑल बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स. जब वो हर जगह पे, अब यूएसए के साथ हमारा तकरीबन कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है. इसके अलावा एक और रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप. स्ट्रेटेजिक कि जब इसमें डिफेंस भी आ जाता है, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपकी डिफेंस करेंगे. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक. एंड स्ट्रेटेजिक मीन्स दैट इट इज आल्सो गोज टू द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द फ्यूचर. दैट वी विल टेक केयर ऑफ योर पॉवर्टी, वी विल टेक केयर ऑफ योर इकोनॉमी, वी विल टेक केयर ऑफ. So South China Sea is a complicated area. You have to read South China Sea. Anybody can give me the definition of South China Sea? The bilateral trade 11 months 2020 touched 78 billion. Border tension between the two. वो तो खैर इंडिया और चाइना का है. पाकिस्तान का जरा आप देखो कि पाकिस्तान और चाइना का कितना बायलैटरल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कितने हैं, ये फिगर्स कंपेयर करो इंडिया और चाइना का. अब सी पेक जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स है, उधर उसमें ग्रांट्स है, लोन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है. ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पे है. लेकिन वो कोई बायलैटरल ट्रेड हमारा नहीं है, कोई हमारे पास कोई चीज़ बेचने की नहीं है. चाइना सब कुछ बेचता है, वो हमसे क्या खरीदेगा. अभी हमने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो साउथ चाइना सी जो है इट शेयर्स बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज. 7 कंट्रीज. तो चाइना ये समझते हैं कि सारा मेरा है. अब जो बाकी कंट्रीज है, फिलीपींस है, ताइवान है, जापान है, मलेशिया है, वो यूएस की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं. तो वो ये कहता है कि यूएस है जो उनको सपोर्ट कर रहा है और चाइना को तंग कर रहा है. पाकिस्तान जो है वो
उसको सपोर्ट करता है, चाइना को सपोर्ट करता है। तो साउथ चाइना सी पे आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि बीका, एनीबॉडी कैन टेल मी द नेम ऑफ बीका बिटवीन चाइना एंड यूएसए एंड इंडिया? USA and India, they signed BICA agreement. Pakistan and China signed intelligence sharing agreement. So BICA, BECA. Anybody can tell me? Please write in Google BICA. I have already given you the links to read all these things theoretically, but just we are discussing the basics. So BICA, the basic exchange program which is there between USA and India, that is so much alarming for Pakistan, because India will be having access to the geospatial technical programs of USA. USA, like Russia, they are very strong in aerospace, very strong. NASA is such a huge organization, and they are controlling the space, the satellites. So if USA gives access to India of the spatial, SPATIAL, spatial is from space. अब जो हमारा बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है बी का BECA, that is between India and USA, and we have similar agreement with China, but USA is on the top in the aerospatial और geospatial programs. एक जियो हो गया जमीन, अब ऊपर जो है स्पेस खला किसने तकसीम किया है? अब मेरे सर के ऊपर जो खला है, इतनी बड़ी खला है, तो वो तो कोई भी बंदा ले सकता है मुझसे। मैं तो ये कुर्सी मैंने अपनी पकड़ी हुई है। तो ये अगर जियो स्पेशल कोऑपरेशन जो है, ये सनी प्रिंस ने लिखा है जियो स्पेशल कोऑपरेशन। अगर इंडिया और यूएसए स्पेस इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ, सो दिस विल बी सच अ इंपॉर्टेंट setback for Pakistan. And another thing is the NSA, the nuclear supply group. India, they can have cooperation in the peaceful nuclear programs, but Pakistan cannot. We both are declared nuclear powers, but USA allows India, but USA doesn't allow Pakistan. Similarly, Pakistan wants to be closer to China. There is criticism that our so much closing with China, it may backfire. People may not like us, that why we are closer to a communist, atheist kind of country, is there was a cold war between Russia and USA, USSR and USA. We were with USA, but now it is we are with China. So people can suspect our designs, especially Europe, developed countries, G7, G20, because in G7 countries, they are more towards USA. So it's a very interesting combination: USA, China, India, Pakistan, and then there are special arrangements. USA has a very specific policy for India. Recently, India, Japan, Australia, and USA, they are cooperating with each other to counteract China. So let's see what Biden will be telling us. If you have a quick question, so you can ask. Otherwise, see you in Pashto classroom. After this class, now when you read those articles that I have given you today, two posts I have done. So yeah, China was also against USSR, because that was another Quad is also there, Karamat Ali, yes. So that is another rivalry is always there.
Now Russia and China, because of SCO, Shanghai Cooperation Organization, that is another dimension, that China, USSR, Pakistan, India, Central Asia, this is another block, emerging block. So after this lecture, now when you read those articles, so you will be understanding that what is going on. I just made your conceptual clarity. I made it interesting. Now you go and read it and understand what USA, what China, what Japan, Australia, South China Sea, Central Asia, this whole game. What are China-India military relations? You can Google it, the details. And they have problems in Ladakh and border areas. They fought a war between China and India. Pakistan and China amicably resolved their border disputes. Some people criticize this, that why Pakistan so easily gave Kashmir to China. Some parts of Kashmir, Gilgit-Baltistan have been given to China. Okay, take it. No problem. People criticize Pakistan, but these are secrets, top secret of the state. We have compromised too much with China. For example, if you see one important secret, that why United Nations resolutions on Kashmir we are not implementing. Because in the resolutions we agreed that we will call back all our armies from Kashmir. India did not agree with it, but we agreed. Why we are diplomatically, we are talking about the UN resolutions, but if we withdraw the troops from Azad Kashmir, it will be a big setback for us. And we in writing agreed with it. We have so many problems with the Shimla agreement, problems with the 1965 and other things. So our people are a bit emotional. We should be a bit rational so that we can get benefits from the world politics. What is the difference between the Cold War of US and Soviet Union and the emerging Cold War? I have given you an article today on this very topic. Guardian, which is a UK very important newspaper, they have written an article on this, that we should not call it Cold War. US and China, this is not, should not be declared as Cold War. Otherwise, the whole world will be again in a big stress. जब गांव में दो चौधरी लड़ते हैं तो आगे पीछे जो मुसल्ली गरीब वो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार ये हाथी की जंग में हम जो है ना क्या होते हैं उसको मारे न जाए. तो हम नहीं चाहते कि यूएसए और चाइना जो है ना वो कोल्ड वार में चले जाए. अगर ये कोल्ड वार में चले जाते हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा. न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम. फिर हम परेशान हैरान और परेशान होंगे कि भाई किधर जाए. वो किसी ने पूछे कि भाई पीर बाबा बड़ा है कि इलम का पहाड़ बड़ा है, तो क्या इतना मैं हैरान हो गया कि मैं क्या करूं. पीर बाबा भी बहुत बड़ा है और भी पहाड़ भी बहुत बड़ा है, तो मैं किसको बड़ा कहूं. सो वी शुड नॉट लेट द वर्ल्ड टू गो फॉर द कोल्ड वार बिटवीन यूएस एंड China. It is not yet declared Cold War. Trade war is there, yes. There is trade war, but it is not yet a declared Cold War. Yes, trade war is there. There are sanctions, there are tariffs, there are taxes, there are more restrictions, more protectionism it is called. It is going against WTO, World Trade Organization, against free trade. So trade war is going on. Globalization, Karamat Ali, you go to Safe One, write globalization in the search button and you will see my 1 hour lecture on globalization. The same you can do here also. In this group, there is a search button, write globalization and you will get
1 hour, 2 hour lectures on globalization. In this group, I have covered everything related to current affairs. Now I am just refreshing, revising, and giving you some new ideas how you can cover your topic. Globalization and globalism also I have explained in this very important topic it is in IR as well as in this group I have already explained. I am already late from my Pashto class. See you in Pashto classroom and then at 10:30 in SAFE PMS.